Hello everyone. Now we'll start with the fourth chapter, that is the issue of debentures. Under this chapter we'll learn the regulations governing issue of debentures. The regulation governing issue of debentures, under that first, that is the provision for the issue of debentures as per Companies Act 2013. Next, that is provision for issue of debentures as per Companies Rule 2014. And third, that is requirements as per SEBI, that is Security Exchange Board of India. Then we'll learn the procedure for the issue of debentures. Now, this debenture trustee, last topic, has been excluded from this chapter for the session 2020 and 21. So, we will not learn about the debenture trustees. Now, first we'll start with the regulation governing issue of debentures. Issue of debentures. Generally, the company prefers to issue the debentures when it wants to raise the funds which can be repaid after a long period of time. मीन्स जब भी कंपनी को पैसे रेज करना है, पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो जब भी कैपिटल रेज करना है फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, तो इट विल बी ऑलवेज बेनिफिशियल टू इशू द डिबेंचर्स. क्यों? क्योंकि अपन डिबेंचर्स जनरली लॉन्ग पीरियड के लिए इशू करते हैं, जैसे 10 years, 15 years, 20 years, 25 years. So for longer period, issue of debentures are benefited for the company. Then regulations governing issue of debentures. So जब भी कंपनी को डिबेंचर्स इशू करना है तो सर्टन रेगुलेशन से, प्रोविजन से जो कंपनी को फुलफिल करनी पड़ती है, कंपेल करनी पड़ती है. तो प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये कंपनी को प्रोविजंस फुलफिल करनी पड़ती है. उसके बाद एक कंपनीज रूल्स 2014, फिर उसके बाद में प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू द आरबीआई गाइडलाइंस एंड द सेबीज रेगुलेशंस. तो इनके अंडर में जितनी प्रोविजंस रहेंगी, कंपनीज एक्ट 2013 की, फिर कंपनीज रूल्स 2014 की, और जो आरबीआई और सेबी के रेगुलेशंस है उनकी जो प्रोविजंस है, ये सारी कंपनी को फुलफिल करनी पड़ती है फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. नाउ depending upon the type of debentures, company has to fulfill the following provisions and the regulations. Means types of debentures अपने पढ़े थे, redeemable रहता है, irredeemable रहता है, convertible रहता है, non convertible रहता है. फिर उसके बाद bearer डिबेंचर से, नॉन रजिस्टर्ड डिबेंचर से, फिर सिक्योर डिबेंचर से और अनसिक्योर डिबेंचर से. तब ये टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स पे डिपेंड करता है कि कंपनी को कौन सी रूल्स, कौन से गाइडलाइंस, कौन सी प्रोविजंस फॉलो करनी है. तो अकॉर्डिंगली अगर प्रोविजन फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, अगर कंपनी को डिबेंचर्स इश्यू करना है तो कंपनी को जनरली प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71 फॉलो करना पड़ता है. Then if the company want to issue the secured debentures, then company has to follow the company's rules 2014. Under that, rule number 18 provision has to be compiled by the company if it wants to issue the secured debentures. Then for the issue and the listing of debentures which are not convertible into equity shares either wholly or partly, so for that the company have to follow the provisions laid down by the SEBI under the regulation 2008, and it is applicable if the debentures are issued through public offer, private placement and for listed debentures. So for that only the SEBI regulation 2008 has to be followed by the company. Now next regulation, that is SEBI regulations 2009. Under this, if the company wants to issue or list the debentures that are convertible either partly or fully into equity shares, so at that time they have to follow the regulations of the SEBI 2009, and according to that the company have to follow the same disclosure norms which are applicable for the equity shares. Now next, that is SEBI regulation 2015. According to this, the company have to follow the provisions which a listed company issuing non-convertible debentures or the perpetual debt instruments etc. has to fulfill this provision. Means if the listed company are issuing non-convertible debentures or the perpetual debt instrument. Perpetual debt instrument, it means it is a debt which does not have any maturity date,
or the issue, and for that the issuer company, it keeps on paying the interest forever till the investor holds the bonds. They are known as perpetual debt instrument. So if the company are, if the listed company are issuing non-convertible or the perpetual debt instrument, so for them they have to follow the SEBI regulation 2015. Then last, that is RBI guidelines. If any bank, whether it is in private or the government banks, if they want to raise the capital by issuing non-equity instruments. Now non-equity instruments means that is related with your public deposits, bonds, debentures. So if any of the bank are issuing these non-equity instruments, so for them they have to follow the RBI guidelines. So these were the act, regulations and the guidelines which the company have to follow the provisions according to this act, regulations and the guidelines. Now any company, it can issue the secured, unsecured, non-convertible or the debentures which are converted fully or partly into equity shares. So here the company can issue the secured, unsecured, convertible, non-convertible debentures. But all these debentures, it must be redeemable, means which can be repaid after a specified term on maturity date. Means company cannot issue the irredeemable debentures according to the new Companies Act 2013. Even the company can issue debentures either to its members, or it can make a public offer, or it can offer it even through the private placements. Means same way, same that of the equity shares, debentures can also be issued either to its members or to the public or through private placement. Now issuing the debentures, for that the authority is vested in the hands of board of directors. Means board of directors of a company has the authority to issue the debentures. Now first, that is the provision for issue of debentures as per the Companies Act 2013. The company had to follow the following provision according to the Companies Act 2013 for issuing the debentures. So first, that is no voting rights. Means company cannot issue the debentures with voting rights, because the debenture holders, they are the creditors of the company. So company do not have any voting rights on the debentures. So they can, but the debenture holders, they can vote only in the matters which affects their rights, but they do not have the voting rights. Then next, that is types of debentures. Company can issue the secured or unsecured or convertible or non-convertible debentures. But all these debentures, they can be redeemed after a specified term. Means company cannot issue the irredeemable debentures. Whichever the types of debentures company are issuing, that is whether it is a secured, unsecured, convertible or non-convertible, for that all these debentures are redeemable debentures. Then next, that is payment of interest and redemption. Means company shall redeem the debentures and pay the interest as per the terms and the conditions of the issue. Means whatever the terms and conditions will be there for the issue of debentures, the company have to compel according to that. Only company can redeem the debentures or pay the interest. Then debenture certificate. The company have to issue the debenture certificate to the debenture holders within 6 months of the allotment of debentures. जब भी कंपनी ने डिबेंचर्स अलॉट किए होंगे डिबेंचर होल्डर्स को, तो उसके 6 महीने के अंदर कंपनी को डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है डिबेंचर होल्डर्स को. Then create debenture redemption reserve. It is compulsory for the company to create the debenture redemption reserve account out of the profits which are available by the company for the payment of dividend. And this money of the debenture redemption reserve account can be utilized
only for redeeming the debentures, means for the redemption of the debentures but not for the other purpose. means कंपनी को कंपलसरी रहता है कि वो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट करके ओपन करे, और ये अकाउंट ओपन होता है आउट ऑफ द प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड ऑफ द कंपनी, और ये अकाउंट के पैसे कंपनी सिर्फ डिबेंचर को रिडेम्ड करने के लिए ही यूटिलाइज कर सकती है, अदर पर्पस के लिए नहीं। फिर नेक्स्ट दैट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज। इफ द कंपनी आर इशूइंग prospectus or if it invites more than 500 people, then at that time it is compulsory for the company to appoint one or the more debenture trustees। अब ये debenture trustees यानी ये institutions रहती है जो प्रोटेक्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स को। तो कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट करना जरूरी रहता है अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है या फिर इनवाइट कर रही है डिबेंचर्स फॉर मोर देन 500 people। Now company has to appoint trustees by entering into a contract with them called as debenture trust deed। मीन्स कंपनी को ये डिबेंचर ट्रस्टीज के साथ मिलके कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना पड़ता है, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट जिसको अपन बोलते हैं डिबेंचर ट्रस्ट डीड। Now next, that is debenture trustees can approach NCLT। NCLT means that is National Company Law Tribunal। अब ये जो डिबेंचर ट्रस्टीज रहते हैं दे हैव टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। मीन्स डिबेंचर ट्रस्टीज अपन क्यों अपॉइंट करते हैं, ताकि डिबेंचर होल्डर्स की जो भी ग्रीवेंस रहते हैं या फिर जो भी कंप्लेंट्स रहेगी या जो भी रेमेडी रहेंगी या फिर जो भी डिफॉल्ट रहेगा या जो भी प्रॉब्लम्स रहेगी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करने के लिए अपन डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट करते हैं। And if the company defaults in repaying the principal amount on maturity or defaults in paying the interest, means अगर कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया होगा, इंटरेस्ट नहीं पे किया होगा डिबेंचर होल्डर्स को, या फिर मैच्योरिटी के टाइम में डिबेंचर्स को उनका प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं किया होगा, तो उस समय ये जो डिबेंचर ट्रस्टीज रहते हैं वो अप्रोच करेंगे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, दैट इज NCLT। मीन्स इनको कंप्लेंट करेंगे, इनको रिड्रेस करेंगे कि डिबेंचर होल्डर्स को उनके पैसे कंपनी ने पे नहीं किए हैं या तो इंटरेस्ट अमाउंट कंपनी ने उनको पे नहीं किए हैं, तो इसके लिए वो रिड्रेस करेंगे NCLT को, डिबेंचर ट्रस्टीज, ऑन बिहाफ ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। Now next, impose restrictions। So when the debenture trust is of the opinion that the assets of the company are insufficient to redeem the principal amount of debentures, तो इट में अप्रोच द NCLT। मीन्स अगर डिबेंचर ट्रस्टीज को लगता है कि कंपनी के पास इनसफिशिएंट अमाउंट है या उतनी असेट्स नहीं है कि वो डिबेंचर होल्डर्स को उनका प्रिंसिपल अमाउंट पे कर सके, तो उस समय वो कंप्लेंट करेंगे NCLT को, मीन्स नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को। उसके बाद जो NCLT रहेगी वो कंपनी को ऑर्डर करेगी कि आप जब तक इनके डिबेंचर होल्डर्स के पैसे उनको रिपे नहीं करोगे तब तक वो इन फ्यूचर में कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स जो नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है या जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे तो उसके थ्रू वो पैसे रेज नहीं कर सकते। मीन्स ये इंस्ट्रूमेंट्स वो इश्यू नहीं कर सकते। मीन्स सबसे पहले कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स का पैसा पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो फ्यूचर में कैपिटल रेज कर पाएंगे। Then last, that is punishment for contravention of provisions of the Companies Act। अगर कंपनी कोई भी ऊपर की प्रोविजंस फॉलो करने के लिए फेल करती है या डिफॉल्ट करती है, तो उस समय कंपनी या फिर जो भी ऑफिसर्स रहेंगे दे विल बी लायबल टू पे द फाइन और द इम्प्रिजनमेंट और विद द both as prescribed by the Companies Act 2013। इसलिए सारी कंपनीज को डिबेंचर्स इशू करते समय ये सारी प्रोविजंस को फॉलो करना कंपलसरी